ठीक है, ये है, this is the like passage that we are having at the moment, and it is for the critical thinking sort of passage. Okay, and here you have got like one passage. अच्छा, एक और चीज़ है that I'll let you know. After that we have followed by the vocabulary. अच्छा, this time I have intensified your critical thinking passages. ठीक है, इसमें you will be noticing some sort of difficult vocabularies as compared to the last week comprehensions. ठीक है, in the last week comprehensions we had comparatively easier vocabularies. ठीक है, but the difficult like somewhat the like tacky questions. But here I have intensified the vocabularies, plus I also had used the all the tacky questions that is supposed to be required. ठीक है, and all the questions, no matter we did them in the the last week and today this week, whatever we are going to do, all of them are 100% aligned with your Cambridge examinations. Okay, all the types of the questions are exactly the same. ठीक है, after that we have got 5 critical questions, 5 critical thinking questions here. ठीक है, अच्छा जी. So here let us get started. Let me check. Okay, we have got so far 3 students here, 2 students here. Let others join as well, but I am going to take a start because I have already told them that I'm not going to wait for more than 2 minutes, and it's been more than 2 minutes now. चलो जी, लेट अस गेट स्टार्टेड. अच्छा, यहाँ है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में बता दूँ. ये लास्ट वीक आई ऑल्सो वांटेड टू लेट यू नो, बट आई डोंट नो, माई लाइक इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, or maybe possible I might have told you about this, कि most of the critical thinking passages, whatever I'm just posting over here and whatever I'm just giving it to you as a part of a practice, so they are actually headingless. You might have noticed one thing, they all are headingless. Why? Because in the last I will be asking you the question that what would be the appropriate sort of heading for this paragraph, and you will answer me orally. It might not be the part of your questions that is written in the form of 5 different questions as a part of a critical thinking. Lekin I will be asking you as a part of a 6th questions here, but not now. Let us read it out, let us understand it, let us attempt all the questions, and after that we are going to take a start. Okay, so kya hai bhai? In recent years, the debate surrounding the role of technology in education has intensified, right? Obviously, education field में the involvement of the technology has become so much. और ये intense हुआ कब? When it actually got intense. It actually got intense in COVID, during the COVID-19 era, because before that education was just an education and it was just a part of a formality sort of thing, using their like technologies in the classrooms. But after the COVID-19, the technology has drastically drastically entered into the education field. ठीक है, so that is why it is written that in the recent years the debate, recent years means COVID-19 years. ठीक है, अब मैंने इसका जानबूझ के पैराग्राफ तुमको बैकग्राउंड दिया, बिकॉज मे बी पॉसिबल यू विल बी नीडिंग इट, एंड यू शुड कीप इट इन माइंड कि अगर वो रिसेंट ईयर्स की बात कर रहा है और टेक्नोलॉजी के एजुकेशन सेक्टर्स में बात कर रहा है, तो वो किस सेंस में बात कर सकता है. ठीक है, सो द डिबेट सराउंडिंग द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन हैज इंटेंसिफाइड अ लॉट. कैसे भाई? Some educators argue that the digital tools are indispensable. Digital tools are indispensable. नहीं पता भाई मुझे indispensable का मतलब, ढूंढते हैं इधर. कहाँ है जी indispensable? Absolutely necessary, essential. ठीक है, indispensable बहुत जबरदस्त वर्ड है, you have to keep it in mind. Necessary है, essential है, indispensable. That means while writing, जब नेसेसरी या एसेंशियल या क्रूशल इस तरह के कोई वर्ड्स लिखने हो, बेटर टू राइट फर्स्ट इंडिस्पेंसिबल, देन क्रूशल, देन एसेंशियल, देन नेसेसरी. बहुत अच्छा एक सेगमेंट बन जाएगा तुम्हारा, और बहुत अच्छा एक लुक आ जाएगा आपके राइटिंग पे. ठीक है, सो इट्स अ वेरी गुड वोकैबुलरी. इंडिस्पेंसिबल बी मीन्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. सो द डिजिटल टूल्स आर नाउ बिकम indispensable, right? While others in एक second, somebody has entered. Okay,
wait, okay जी. So others are talking about that like क्या है it like some of the teachers are arguing that it has become quite essential, means quite indispensable, but others are saying, while others caution that over reliance on screen may compromise the traditional learning skills. क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छी बात कही है इसने कि over reliance यानी over depending on the screens. If you are totally depending on the screens, if you are totally depending on the technology, and if you are putting yourself too much into the screen learning, so your traditional learning skills means रट्टा लगाना, समझना और चीज़ों को करना may become a little bit problematic, may become a little bit compromising. ठीक है, यानी यहाँ पे फर्क पड़ सकता है आपके ट्रेडिशनल लर्निंग स्किल्स में. हो सकता है बच्चे, यार एक और आ गया, एक सेकंड. ओके जी. हो सकता है कि बच्चे जो है अभी जैसे कि राइटिंग स्किल्स आप लोगों की बहुत कमज़ोर है, उसकी वजह ये है कि यू पीपल आर टू मच इनटू लिसनिंग एंड वॉचिंग. बट नाउ डे, इससे पहले की बात अगर देखो 10 साल 20 साल 25 साल पहले की बात देखो, द पीपल आर मोर इनटू राइटिंग एंड रीडिंग. बट नाउ यू पीपल आर रीडिंग एंड वॉचिंग. ठीक है, राइटिंग कहीं नहीं है. तो ये ट्रेडिशनल लर्निंग स्किल्स है, राइट? अच्छा, the proliferation of online resources has undeniably transformed how students acquire knowledge. Proliferation, like proliferations, भाई नहीं पता मुझे proliferation का मतलब क्या है. Rapid increase in numbers, drastic numbers, right? Drastic numbers, rapid increase in numbers, proliferations. ठीक है, मैं खुद ही लाइक प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही मुझे. प्रोलिफरेशन इज ऑल अबाउट अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स. तो हमारे पास क्या आ रहा भाई? द प्रोलिफरेशंस ऑफ द ऑनलाइन रिसोर्सेज मीन्स एन एक्सट्रीम like amount or like big number of content available in the online resources has undeniably transformed how students acquire knowledge. ठीक है, बिल्कुल एक नॉलेज गेन करने का जो तरीका है वो एक अनडिनाइबल तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया. यानी आप इसको इनकार कर ही नहीं सकते, इतना आसान हो गया. यानी हर कोई, नो मैटर वट एवर द टॉपिक आई गिव यू एंड नो मैटर हाउ मच इंफॉर्मेशन डू यू हैव ऑलरेडी इन दैट टॉपिक, तो यू विल गेट द हेल्प ऑफ एआई और यू विल गेट द हेल्प ऑफ इंटरनेट. हमारे ज़माने में तो सिर्फ इंटरनेट ही होता था और वो भी गूगल. ठीक है, और तुम लोगों के भी ज़माने में अब तो खैर एआई आ गई है, तो अब एआई इज़ वन स्टेप अहेड फ्रॉम द गूगल ऑब्वियसली. अब तो खैर गूगल के साथ भी एआई ऐड हो गया. तो इट इज़, प्रीवियसली हम भी अगर नेट से लेते थे कोई हेल्प तो बहुत मुश्किल से नेट से नहीं निकलता था, लेकिन अब इट हैज़ बिकम क्वाइट अ ईजी थिंग फॉर यू. Information once buried in the libraries can now be accessed within seconds. क्या मतलब? पहले ज़माने में क्या कर रहे थे भाई? आज से 25-30 साल पहले क्या होता था? लोग लाइब्रेरीज जाते थे, इंफॉर्मेशन को खंगालते थे, बुक्स में अपना टाइम स्पेंड करते थे, और अब एक बटन के आगे आपका क्या हो गया जनाब? एक बटन के आगे आपकी हर इंफॉर्मेशन जो है आपके दहलीज पर मौजूद है. Yet this instant accessibility has raised questions about the depth of understanding and the quality of the critical engagement. Yet this instant accessibility, ये जो एकदम से accessibility आ रही है आपके पास, एकदम से जो आपकी हर चीज में पहुंच आ जा रही है, instant मतलब at once, has raised questions about the depth of understanding and the quality of the critical engagement. बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स पैदा कर दिए हैं कि आपको कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको कितनी क्वालिटी अंडरस्टैंडिंग हुई है, और कितना क्रिटिकली आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हो. दिस इज व्हाट द फर्स्ट पैराग्राफ टेल्स अस. ओके, व्हेन वी मूव ऑन टू द सेकंड पैराग्राफ. अच्छा, यहाँ बताने का इतना डिटेल में मकसद क्या है कि स्टूडेंट्स, इससे पहले भी जो मेरे साथ पहले स्टूडेंट्स थे उनको पता है कि आई जनरली डिस्क्राइब द पैराग्राफ विद क्वाइट अ डिटेल्ड मैनर. लेकिन ये मैं अभी नहीं करता कि तुम लोगों को समझ में आ जाए, मुझे कोई शौक नहीं तुम लोगों को समझाने का इस तरह. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू डू द सेम थिंग व्हेन समथिंग इज बीइंग केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू. और वो एकदम से नहीं होगा. मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यकीन करो या नहीं करो, आई एम रीडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरे पास सिर्फ एक चीज लेकर आ गया था, मैं उसको मैंने बस डाउनलोड किया, डाउनलोड करके मैं आपके सामने खोल के बैठ गया, और जैसे आप आज पहली बार पढ़ रहे हो, मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ उस चीज को. बट
why I am able to let you know so many things in an instant here with just by reading it for the first time, क्योंकि I have a practice of reading and I did it for so many times. और ये एकदम से within a night नहीं आएगा. This is how you also have to understand the text before you attempt any comprehension passages, especially during your examination. और इसी वजह से 1 से 1.5 साल का गैप रखा जाता है आपके पास आपके एग्जाम्स में, ताकि जो है आप हर चीज को ऑथेंटिकली और प्रॉपरली एट वंस ही लेकर चल सको. ठीक है, तो इस तरह आपको प्रैक्टिसेस आएगी माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, एकदम से नहीं होगा. इसी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ जितना पहला फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको पढ़ के जितना समझ में आया, अभी जितना मैंने समझाया एट वंस आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, आई नो दैट. ठीक है, अगर नहीं आया तो वो रेज हैंड कर लेना मुझसे. ठीक है, सो ये चीज आपको हर वक्त आनी चाहिए, हर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, और ये प्रैक्टिस से ही होता है स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट. ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं. सेकंड पैराग्राफ. मोर ओवर टेक्नोलॉजी हैज ऑल्टर्ड क्लासरूम्स डायनेमिक्स. टेक्नोलॉजी ने जाहिर सी बात है क्लासरूम डायनेमिक्स को भी, यानी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को, क्लासरूम के प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ज़्यादा चेंज करके रख दिया. क्योंकि आजकल क्या करते हो तुम ही लोग हैं, जैसे खिजर की बात कर लूँ या और मेरे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दे आर आस्किंग अबाउट सर प्रोजेक्टर नहीं है क्लास में, सर एसी नहीं है क्लास में. पहले तो हमारे इसमें ऐसा नहीं होता था, पहले तो कोई प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाता था. ठीक है, लेकिन अब क्या है, तुम लोग लाइक एडिक्ट हो चुके हो उस चीज़ के. दैट इज़ द रीज़न कि यू पीपल हैव लाइक entirely altered the dynamics of everything. ठीक है, teachers once seen as a like a sole provider of knowledge now share their authority with the devices and search engines. टीचर्स जो किसी ज़माने में अपने आप को एक सोल प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज समझते थे, ठीक है, यानी एक अपने आप को नॉलेज फराहम करने का जरिया समझते थे, नाउ शेयर देयर अथॉरिटी विद डिवाइसेस एंड सर्च इंजन्स. और आज अपनी अथॉरिटी को डिवाइसेस और सर्च इंजन से भी जोड़े रखते हैं. ठीक है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ फला वेबसाइट है, फला लाइक डिक्शनरी है, फला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिस पे आपको आना है. इनफैक्ट वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ इट इज ऑल्सो द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एज वेल. ओके, सो हम भी एक टेक्नोलॉजी को ही यूज कर रहे हैं. विदाउट इट आई एम ऑल्सो नथिंग एट ऑल. वाइल द शिफ्ट एनकरेज इन स्टूडेंट इंडिपेंडेंस. और ये जो शिफ्टिंग हुई है फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजी से थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी टीचिंग मेथडोलॉजी इंक्लूडिंग द यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. ठीक है, इसमें इनकरेज हुआ है स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंसी. इट कैन ऑल्सो फोस्टर सुपरफिशियल लर्निंग्स इफ लर्नर स्किम थ्रू द इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्लेक्शन. ठीक है, ये सुपरफिशियल लर्निंग की तरफ भी, यानी एक तरीके से जल्दी लर्निंग, फास्ट लर्निंग की तरफ भी लर्नर्स को ले जाते हैं. और स्पेशली वो लर्नर्स, वो स्टूडेंट जो कि स्किम थ्रू करना चाहते हैं, यानी फटाफट चीज़ों को गेट करना चाहते हैं, तो इससे क्या होता है कि इनको काफ़ी मदद मिलती है इन टेक्नोलॉजीज से. ठीक है, यहाँ पर सुपरफिशियल लर्निंग का मतलब होता है जस्ट लर्निंग. ठीक है, यानी इन डेप्थ लर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और इंफॉर्मेशन विदाउट रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पे बगैर एक्चुअल टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स को जाने हुए. There is a danger that the art of patient reading and analytical thinking may diminish in an age dominated by the rapid consumptions of the content. ये एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़ा एक डेंजर समझा जा रहा है कि that the art of patient reading, यानी जो एक रीडिंग में एक आर्ट चाहिए था, जो रीडिंग में एक पेशेंस चाहिए थी, समझने की टाइम लगाना पड़ता था, और जो एनालिटिकल थिंकिंग्स हुआ करती थी, आज वो इन टेक्नोलॉजीज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है जनाब, आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश हो रही है, ख़त्म हो रही है, फिनिश हो रही है इन द एज डोमिनेटेड. और वो किस लिए हो रहा है? द एज डोमिनेटेड बाय द रैपिड कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट. Rapid consumption of the content, the rapid usage of the technology, where the immense amount of content is present within a click. पहले इसी immense amount of content को हासिल करने के लिए आपको जो है हफ्तों और महीनों लग जाते थे, अब आप मिनटों में और सेकंडों में काम करते हो. ठीक है, दिस इज द लाइक द सेकंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ क्या है भाई आपका? On the other hand, the proponents, क्या बोल रहा हूं मैं, what is it, I'm not pronouncing it properly.
proponents, ठीक है. On the other hand, the proponents of the digital learning argue that technology democratize education. अब भाई proponents का क्या मतलब है मुझे तो नहीं पता proponents का. Have I written it over here? Have I written it over here? नहीं. चलो अब मुझे जरा बताओ भाई, खुद ही बता दो कि proponents का क्या मतलब हो सकता है. एनीबडी कैन, ये एक लाइन को पढ़ो और गेस करो कि प्रोपोनेंट्स का मतलब क्या होगा. कैन एनीबडी टेल मी अबाउट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोपोनेंट्स? Yeah, please go ahead. Anybody can give me the like wild guess. Yes, anybody can give me the wild guess, please. Proponents. सर एक्सपोनेंट. सॉरी बेटा, दोबारा बताइए. एक्सपोनेंट. नहीं, देखो प्रोपोनेंट्स का मतलब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड द प्रोपोनेंट ऑफ द डिजिटल द प्रोपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल आर्ग्यू दैट द प्रोपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल आर्ग्यू मींस, हाँ ये कह सकते हो, एक्सपोनेंट्स कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली मतलब है वो इंसान या वो चीज जिसके अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज जो है वो पाई जाती हो, जो एक्चुअल हब ऑफ नॉलेज हो, उसको हम प्रोपोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिजिटल लर्निंग जो है वो एक प्रोपोनेंट्स है ऑब्वियसली. ठीक है, जिसमें ये ओवरऑल लर्निंग हब है. दैट आर्ग्यू दैट टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइज एजुकेशन. टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटिक सिचुएशन पैदा कर दी एजुकेशन में, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया एजुकेशन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अच्छा मुझे जरा सा 2 मिनट दो, अजान इज गोइंग ऑन एंड आई विल स्पीक आफ्टर अजान. ठीक है, 1 मिनट. Okay, Ji. So, I'm back here again. On the other hand, the proponents of the digital learning argue that जो digital learning का actual hub है, वो ये argue करता है that the technology democratize education. टेक्नोलॉजी ने जो है वो उसने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक कर दिया, बहुत ज़्यादा सियासत से भरपूर कर दिया, यानी कॉन्फ्लिक्टेड कर दिया. A student from a remote village can attend virtual lectures from world-renowned universities. ठीक है, अब यहाँ पे डेमोक्रेटाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर मैंने शुरू में क्या बोला अभी आपको कि उसने काफी हद तक जो है कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर दिए. काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स इन व्हाट सेंस कि भाई कोई स्टूडेंट जो है किसी दुनिया के किसी भी किनारे में बैठकर कहीं से किसी के साथ क्लास ले सकता है. यहाँ पे इवन हमारे अपनी क्लासेस में somebody is from इस्लामाबाद, somebody is from जो है कराची, somebody is from another like a city. तो हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं फिलहाल,
and taking the same class. So this is basically known as a remote village, can attend the virtual lectures from world renowned universities. आप even ये काम बहुत world renowned universities के साथ भी कर सकते हो, बहुत सारे अच्छी universities भी अपनी online classes देती हैं, ठीक है. तो this is democratized in a positive point of view से, ठीक है. ये हम इसको positive point of view से लेंगे, ठीक है. This inclusivity widens opportunities for those who may otherwise be excluded due to the geographical or the financial barriers, ठीक है. Inclusivity, पता नहीं भाई inclusivity का क्या मतलब है. The practice of including all type of people without discrimination. कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, हमें नहीं पता कुछ, हमें क्लास लेने से मतलब है, बात खत्म. तो ये है inclusivity. This inclusivity widen the opportunities for those, यानी आप बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आप एक ही क्लास में बैठ सकते हो, ठीक है. बहुत सारे जगहों पर होता है कि भाई फला हिंदू है, फला मुस्लिम है, फला यहूदी, आप यहूदी के साथ बैठना नहीं पसंद करोगे, लेकिन यहाँ पर आप जो है यहाँ पे नहीं जानते किसकी आइडेंटिटी क्या है, तो खामोशी से वो बंदा अपनी क्लासेस ले जाएगा और आप उसके साथ मिलके बैठ के पढ़ते रहोगे, ठीक है. अच्छा जी, यस इब्राहिम, क्या पूछ रहे हो बेटा, बोलो. सर व्हाट इनकल्सिविटी. इनकल्सिविटी वही तो बता रहा हूं मैं, उसी की तो मैंने डेफिनेशन बताई है, देखो ना, ये रहा. द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है. विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के किसी भी हर तबके का, हर इंसान, हर मजहब का बंदा जो है बगैर किसी फर्क के एक ही क्लास के अंदर बैठ के आराम से क्लास ले सकता है. An opportunity for those who may otherwise be included during the geographical and financial barrier. Moreover, ये एक सबसे बेहतरीन opportunities है for those students who are sitting far away from the geographical location, या who are even unable to you can say unable to bear the big financial you can say fees or something like that, financial burdens, ठीक है. तो एक गरीब इंसान भी आराम से एक ऑनलाइन क्लासेस ले लेता है. इससे क्या होता है कि इसमें क्या होती है कि आपको यानी कम से कम पैसों में अच्छे से अच्छी तालीम मिल सकती है. टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स दैट कैन अडेप्ट टू इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल. एक ऐसा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक यूनिक स्टाइल फराहम करता है, मेकिंग एजुकेशन मोर एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल. और इससे क्या होती है, आपकी एजुकेशन मोर एंगेजिंग होती है, मोर एक्सेसिबल होती है. एक्सेसिबल के मुराद यहाँ पर यह है, यू कैन एक्सेस लाइक मोर एंड मोर वैल्यूएबल कंटेंट्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू टॉक अबाउट. अच्छा, फर्दर लास्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, नेवरदलेस the balance between the traditional methodology and the digital innovation remains delicate, ठीक है. balance between the traditional methods and the digital innovation remains delicate means दोनों में अच्छा खासा फर्क आज भी पाया जाता है, चाहे हम ट्रेडिशनल लर्निंग मेथोडोलॉजी की बात करें या डिजिटल इनोवेशन यानी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें. ओवर डिपेंडेंस over dependence on one at the expense of the other may result in education shortcomings, ठीक है. यानी दोनों में से किसी के पर भी ओवर डिपेंड करना आपके ऊपर जो है वो लाइक एजुकेशनल शॉर्टकमिंग्स का जो है वो बायस बन सकता है, मतलब आपके एजुकेशन लॉस का बायस बन सकता है. यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि you have to be dependent entirely on traditional learning methodology. You have to be relying entirely upon the innovative learning methodology जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. ऐसा नहीं, you have to keep everything balanced, right? This is what he has to say. The challenge therefore is not whether to use technology in the education but how to employ it wisely. वही मेरी वाली बात अभी जो मैंने कही है कि एक्चुअली चैलेंज ये नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी के जरिए एजुकेशन लेनी है, आपको आजकल के हिसाब से एजुकेशन लेनी है. असल में ये है कि आपको अपने हर कैपेबिलिटी और एजुकेशन को बहुत वाइसली जो है हैंडल करना है, ensuring that complements rather than replaces the irreplaceable values of the critical thought, creativity and a human interaction. और इस बात को इंश्योर कराना है कि आप जो है एक इररिप्लेसेबल
वैल्यूज को आप जो है वो लाइक बरूए कार ला सको और उसके क्रिटिकल थॉट्स को जो है आप समझ सको, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर जो पैदा हुई है वो और अच्छे से अच्छी होती रहे, और प्लस क्या है, एक ह्यूमन इंटरैक्शन आपकी बहुत अच्छी रहे। दैट मीन्स कि यू हैव टू बी interactive enough to share your ideas, no matter in the traditional classrooms, no matter in the non-traditional classrooms। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मतलब यही है कि चाहे आप कहीं से भी कैसे भी आप एजुकेशन हासिल कर रहे हो, you have to be like interactive, you have to be creative and you have to be critical thought person। ठीक है, ये है आपका ओवरऑल एक पैसेज जिसको आपको समझ लिया है आपने। ठीक है, और here you have got all the difficult vocabularies, but still one or two vocabularies has been missed। ठीक है, and then you have got some critical questions over here। अच्छा, while replying these questions kindly do not give big answers, go for the shortest possible answers। shortest possible से मुराद no more than 2 lines, 1 से 1.5 लाइन, 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, 1.5 लाइन वैसे इनफ है, 1.5 लाइन इज इनफ। ठीक है, अच्छा, बिफोर वी टेक अ स्टार्ट, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो प्लीज रेज योर हैंड एंड डू लेट मी नो अबाउट इट। जी भाई, anybody who wants to speak anything, please go ahead, unmute your mic directly and मुझे बताओ। yes Mr. शाफ, No, आप sir. मुझे बताओ। शाफ, तुम बताओ पहले, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है तो एक्सप्लेनेशन जो हुई है तो मुझे बताओ कि have you understood that explanation or not? yes Mr. शाफ, I would like to listen something from you। अस्सलाम वालेकुम सर। वास्सलाम जी। जी सर, क्लास तो समझ में मेरे को थोड़ी आई है, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता करता रहूँगा तो और भी इंशाल्लाह अभी है तो देखो, वैसे तुमने जो है बेटा, तुमने अभी थोड़ा सा ना लाइक एक पैराग्राफ के बाद शायद तुमने जो है ज्वाइन किया था, डज नॉट मैटर। आई एम ऑलरेडी पोस्टिंग लाइक यू कैन से वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर दिस, so you will be able to come to know each and everything very properly। ठीक है, but still right now you are supposed to answer all these questions। क्लास में रहना है, जाना नहीं है अभी आपने। ठीक है, you're not supposed to leave the class and you have to see how these students are working all together। और मैं आपसे भी questions करूंगा। it is not only your first class, it is your actual class today as well। सर। okay ओके okay start working ओके guys। I सर। have given you the PDF, start working, come on। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। जी, जी सर, मेरे ट्यूटर का थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो इसलिए फिर मुझे क्लास लीव करनी होगी। कितने बजे है आपके ट्यूटर का टाइम माय डियर? अभी मेरे ख्याल में 5-10 मिनट बाद वो आ जाएंगे, जैसे 6:30 का टाइम होता है, 5:30 का, सॉरी। तो अब मेरे ख्याल में वो आ जाएंगे, तो 5 बाद। चलो चलो चलो, ओके ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।